gadgets, new scientific apparatuses, which cannot be done by an ordinary man. An ordinary man only uses those apparatus, only uses those gadgets. It's the job of a specialist. So if everyone wants to become a specialist, then one has to work hard and move on the path of knowing God. That path has to be walked upon. That path is introversial path. That path is knowing yourself, finding God within you. And that is also a risky path. If you are able to find, if you are able to discover and realize the self within, or a glimpse of that Godhood, then you are lucky, or you will accept it. Otherwise, you cannot accept it. This is one way. Anyone can stop me if I am crossing the 3 minute time set for me, because yeah, Dada, maybe you can continue further, but maybe if you want to wrap it up, then we can continue. Okay, fine, because one doesn't know while speaking, one doesn't know the time limit. So what I said is, those who really want to know God, they have to know it practically. There are other people who do not have that inner capacity to know. They follow what parampara says or what tradition says, or they already have a set method of accepting God in the form of a image, in the form of an idol, or in the form of a what we say written in the scriptures in the form of text. So they adore that, they respect that, and it is a kind of veneration, it is a kind of respect which they give to that book or to an idol or to an image. But deep down they realize that we are not completely knowing God. Those who have known, those who have tasted, they tell that the experience of God or the experience of godliness is termed as bliss, is actually a huge abundance of happiness or peace. Many people say or relate God with peace. Many people relate God with bliss. So God finally cannot be accepted as just one person or an image of a person or an idol of a person. The modern times, the scientific era demands this, that God has to be realized within. And if you taste God, it is an absolute entity which is a huge ocean of bliss. So if you experience bliss for 5 seconds, if you taste that nectar, that immortality for just 5 seconds or 1 minute, you should be happy and glad that you have tasted God, and you should be one of those people who can say that yes, God exists. And if one has not tasted, one is free to answer this question in a way that yes, God doesn't exist for me. I mean, God doesn't exist for that person who has not tasted bliss. But even if God doesn't exist for that person may say that yes, God does exist, but I'm still searching, I'm still finding, I'm not found yet. It's like people chasing money. Some people may have earned crores of rupees, some people have not. So God is also like that. God has to be chased, God has to be found, God has to be realized. And the method is introversial method. Method is going deep within, and touching the real shore of your self. And once you taste it, you become a person who can declare on top of his voice that yes, God does exist. So here I would like to stop and take a break, and then the next speaker can take it from here. Okay, so now I'm requesting, see, I may not remember the order, but you can also remind me, but maybe next is Dada Pundevanji. Yeah. As Dada Dharma Premananda has asked the question is whether God exists or not. Arthat, does God exist? The question. So when we get the question, so we need to know who is asking the question. There are two types of people. The first one, they have a inquisitiveness or curiosity to know the truth of life, or truth of creation, or the cause behind the creation, or an unseen entity. So these things
only happens when people are having inquisitiveness and the hunger for that unknown entity. And the second one is they don't have the inquisitiveness to know the reality of life, or that is the cause of the world, the cause of this universe. They just bluntly say, oh, there is nothing like God. And there is nothing like God. It is said by, there are a number of reasons which already our Lalit Paramuji has explained, that dogmatic religion, they couldn't define the word of God. At the same time, whatever they define, but that is not very much practical in their life. It is not seen practical. Whatever they say, they follow something different. So one is the dogmatic faith of God, another is non-believer of God. And the people who is having really the inquisitiveness. So our question and the answer is for those who is having the progressive mind and they have the inquisitiveness. So people want the proof of existence of God. The first thing which can be proved and which is unproved. There are three types of things we see in this world. The first one is the crude material world, which we can perceive. We can perceive it, at the same time, we can make some concept about those things, perceived things. And there are some other thing which is not crude material, and they doesn't have the corporal structure too. So only we can make perception or conception in the aspect of the corporal structure or material world. But when we go to the subtler level, then there is no method or there is no instrument by which we can apprehend the existence of the world of mind. The science of today has not yet been able to define the existence of mind. Only a general psychology says some functionaries and the functions of mind, but how mind is made up, what are the elements by which the mind is made up. So science has not yet been able to reach the realm of sight totally. At the same time, the topic we are talking about, that is the existence of God. So it is accepted by the philosophers, accepted by the rishis. Yes, there is a unseen force. And that unseen force is also narrated by a great scientist or father of modern physics, is Sir Einstein. He has already mentioned in his letter that there is a supreme intelligent force. And that intelligent force is controlling everything. He is controlling at the same time, controlling force, power of attraction. And that power of attraction is nothing but it is love. So God is love and God is attraction. God is the nucleus, the most attractive powers, because when we see the different structures like atoms, we see a nucleus, electron is revolving. When we see the solar system, we see the sun, by a total 9 planets are revolving around the sun. The sun becomes the control of this planetary system.
What happened? He's lost connection. No, he's Dada, you I went think he- offline. Sorry, network again started. Yeah. So few more seconds for me. Network is disturbing. So the fourth thing is that he has said the love is attraction. Or in this, when we see the cosmology, entire universe, celestial bodies, comets, meteors, whatever we see, whether it's animate or inanimate, is it corporal or corporal, everything is being controlled by a power, and everything is being attracted by a supreme nucleus. That very supreme nucleus is defined as a God. Those who takes love, they are also, those who gives love, they are also enlightened. This is the version of Einstein. So he has already realized this thing, that behind every creation, behind every action, behind every happening, there is a power. That power controls and administrating everything. So that very unseen power, which is almighty, it is beyond the perception and the conception of mind. So if someone wants the proof, that please give me proof of God, existence of God. So God is not something like laddu, peda, and some sweetmeats or any cookies that we go to the supermarket, eat, and they serve to the people. But it is the stratum, it is the realm which is beyond the periphery of mind too. Just when you are suppose just an example, if you are in a hill or mountain, okay, by sitting in a mountain, can you see or realize the phenomenon of an ocean? You cannot, because when there is a hilly area, mountain area, you see the small rivers, rivulets, and the small rivers, they become big rivers that merge into ocean. And when people go near to the ocean, what they see? Oh, thousands and hundreds of rivers, if are merged together, still the flow or existence of ocean are not disturbed. So ocean is vast, which can accommodate thousands of rivers, accommodate the waters, thousands of rivers. So when you reach the on the bank of ocean, what do you see? Oh, it is not a river. It is endless water flow, endless reservoir of water. It cannot be fathomed. So the existence of God is something like that. When you come across of your physical world, then enter into the psychic world, then you transcend yourself. You transform your psychic existence into such a state where entire aspiration of mind is pinnacled. Entire aspiration, entire thing is pinnacled. And when you reach to the end of that ocean, then you see the existence, a realm full of bliss, realm full of perennial source of current, or a perennial source of consciousness. So that very consciousness cannot be realized on the bank of an ocean. Only you can fathom the depth of that ocean when you enter to that vast reservoir of consciousness. And that very vast reservoir of consciousness is Supreme Brahma itself, because there is no English synonyms for Brahma. So
biblical order, they say God, but there are hundreds of words. But only one thing, the words by word, we cannot define the existence of God. Only it can be realized through gradual upgradation of transformation of the self. Thank you so much. Namaskar. Next, I think I would like to request, I just want to make a soft reminder on the time limits. Next, I would like to request is Didi Vinita Anandji. If you are ready, you can please start. अरे आप मुझे बोल रहे हैं ना? हाँ, अगर आप शुरू कर सकती हैं तो अच्छा है. Thank you very much. This is very nice discussion and very nice question, but genuine question for today's human society. I will continue it in Hindi. I hope this is fine for all. Yes, sure. And my big brothers always said very nicely, so I will not go on that point. I will come on the point, actually direct. I will come on the point. ये इस विश्व में जितनी भी संरचनाएं हैं, जो क्रिएशंस हैं, उन सब का एक सेंट्रल पॉइंट होता है, as Dada Lalit Parimus Dada said and Devanand Dada said, yeah, I agree with them. और इसी तरह से ये विश्व ब्रह्मांड भी एक संरचना है, इसका भी एक सेंट्रल पॉइंट है, एक केंद्र बिंदु है, और ये केंद्र बिंदु ही आनंद घन चैतन्य सत्ता है, ब्लिसफुल कॉन्शियस एंटिटी। संपूर्ण सृष्टि उनके ही आकर्षण में बधी उनकी तरफ बढ़ रही है। तो इन आनंद घन चैतन्य सत्ता को ही परमात्मा भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं, गॉड भी कहते हैं। वेदों में इनको सच्चिद आनंद कहा गया है। इनसे ज्यादा सत्य कुछ और नहीं है, इनसे ज्यादा आनंदमय कुछ और नहीं है, और इनसे ज्यादा चैतन्य कुछ और नहीं है। तो मनुष्य एक मन प्रधान जीव है। मनुष्य के मन की ये विशेषता है कि वो हमेशा सुख चाहता है, और जो कभी न खत्म हो, जो निरंतर बना रहे। और निरंतर रहने वाले सुख को सुखम अनंतम आनंदम, बाबा ने इसको आनंद सूत्रम में कहा है, सुखम अनंतम आनंदम। तो जैसे जैसे मनुष्य उस साधना के माध्यम से उस आनंद घन चैतन्य सत्ता के संपर्क में आता है, वो आनंद की गहराई बढ़ती जाती है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। और धीरे धीरे मनुष्य का मन उसी आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसी बृहत में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो हम ये पाते हैं कि वो जो चूंकि ये सृष्टि ये उनका ही विकास है, उनका ही उसी आनंद घन चैतन्य सत्ता का विकास है स्थूल पदार्थ के रूप में। तो हर एक चीज में, हर एक वस्तु में उसी चेतना का अभिप्रकाश होता है, जो प्रकृति के प्रभाव में है, जिसकी अभिव्यक्ति कम होती है। जहां प्रकृति का प्रभाव ज्यादा होता है, वहां उस चेतना की अभिव्यक्ति कम होती है। मनुष्य पर उस चेतना, मनुष्य मन पर उस चेतना, उस प्योर कॉन्शियसनेस का की प्रतिछाया अधिक देखी जा सकती है। इसलिए मनुष्य को ये सुयोग प्राप्त है, उसके अंदर ये क्षमता है कि वो प्रयास करके उस बृहत तत्व में, उस परम तत्व में प्रतिष्ठित हो सके। जो लोग आध्यात्मिक साधना के द्वारा आत्म सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं, वो लोग अपनी आत्मा के रूप में ही पूरे संसार को देखते हैं। वो ये उन्हें लगता है कि जो उनके अंदर है वही सबके अंदर है, जो मुझ में है वही सब में है। उनसे अगर ये सवाल पूछा जाए, वो प्रत्येक कण कण में उसी चेतना के, उसी चैतन्य चेतना के अभिप्रकाश को देखते हैं। तो वो इस सवाल के जवाब में यही कहेंगे कि सिर्फ परमात्मा का ही अस्तित्व है, दूसरा कुछ है ही नहीं।
सिर्फ परमात्मा का अस्तित्व है, बाकी सारी चीजें तो उनके परिणाम स्वरूप है। अगर व्यक्ति है तो उसकी छाया है, अगर व्यक्ति नहीं है तो उसकी छाया भी नहीं होगी। ये हमारी क्षमता पर निर्भर करता है कि हम अपनी क्षमता का कितना विकास कर सकते हैं उनको जानने के लिए, हम अपनी आध्यात्मिक क्षमता का कितना विकास कर सकते हैं उनको समझने में। जिस तरह से प्रकृति, आज वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोज की, प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीजें छिपी थी जिसको उन्होंने डिस्कवर किया, अनकवर किया। ऐसा नहीं है कि प्रकृति के अंदर वो चीजें नहीं थी, वो थी, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी क्षमता का विकास किया और प्रकृति के अंदर से वो चीजें खोज खोज करके सर्वग्राह्य बनाया। ठीक उसी तरह से ब्रह्म को समझने के लिए, गॉड को समझने के लिए हमें अपनी आध्यात्मिक क्षमता का विकास करना होगा जिससे हम उनको समझ सकें। और कोई भी चीज, जब किसी भी चीज को टेस्ट करना होता है, प्रूफ करना होता है, जैसे एक फीवर है, फीवर को टेस्ट करने के लिए थर्मामीटर चाहिए, उससे टेस्ट हो जाता है। लेकिन जब ब्लड में बैक्टीरिया को टेस्ट करना होगा तो उसके लिए अलग लैब चाहिए, उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वायरस टेस्ट करना होगा तो उसके लिए अलग सेटअप चाहिए, एक्सपर्ट भी अलग होंगे। उसी तरह से जो चीजें हमारे इंद्रियों के प्रभाव में आती है, जो चीजें हमारे इंद्रियों के पकड़ में आती है, वो इंद्रिय ग्राह्य होती है, सेंसेशन उसको कहते हैं। ठीक उससे सटल जो चीजें होती हैं वो मनसा ग्राह्य होती है, वो विचारों के पकड़ में होती है, तो उनको परसेप्शन कहेंगे। वो वैचारिक स्तर पर काम करती है, वो इनसे सटल होती है। लेकिन आत्मा, परमात्मा वो सबसे सूक्ष्म है, सटलर है, तो वो भाव ग्राह्यता में, वहां पे उनको देखा जा सकता है, वहां उनको समझा जा सकता है, उनको महसूस किया जा सकता है, उनको रियलाइज किया जा सकता है। और इसके लिए जिस तरह से किसी भी विषय को जानने के लिए पहले उसमें MA करना होता है, PhD करना होता है, फिर महारत हासिल होती है और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी तरह से ब्रह्म को जानने के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता होती है। और ये गुरु कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्म ही गुरु के रूप में आते, क्योंकि उनके अलावा कोई उन तक पहुंचा ही नहीं सकता है। तो स्वयं ब्रह्म ही गुरु के रूप में शिष्य का मार्गनिर्देशन करते हैं। और उसके बाद एक ऐसा समय आता है जहां न गुरु को कहने के लिए कुछ रह जाता है, न शिष्य के सुनने के लिए कुछ रह जाता है। रह जाता है तो सिर्फ वो भाव, वो अवस्था, सारे विचारों और प्रकारों का तिरोहन हो चुका होता है। तो इनको समझा जा सकता है, रियलाइज किया जा सकता है, और इसके लिए आध्यात्मिक साधना का अभ्यास करना होगा। उसके प्रैक्टिस से, उसके प्रयास से ही हम इनको समझ सकते हैं और इन तक पहुंच सकते हैं, जो कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट गोल है, सर्वोपलब्धि है, चरम लक्ष्य है। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। आगे मैं रिक्वेस्ट करता हूं दादा नित्य सुंदरान जी से, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि चर्चा को आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो दादा नित्य सुंदरान जी। नमस्कार। आज का जो चर्चा का विषय है वो है डज गॉड एग्जिस्ट, क्या ईश्वर है या उसका अस्तित्व है, इस पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन शास्त्रों में मुख्यतः 6 प्रकार के दर्शन शास्त्रों का जिक्र मिलता है, जिसे हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं। इन षड दर्शनों में 3 दर्शन नास्तिकवाद है तथा 3 आस्तिकवाद है। नास्तिकवाद का सब लोग मतलब जानते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, और आस्तिकवाद दर्शन उसे कहते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। अब
रहा इसकी वैज्ञानिक विश्लेषण, तो हम लोग सभी जानते हैं, लोग कहते हैं कि आज विज्ञान बहुत उन्नति प्रगति कर चुके हैं, लेकिन अगर वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विज्ञान अभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाई है जहां इसे पहुंचनी चाहिए। हाँ, प्रगतिशील है, और ऐसा देखा गया है कि एक वैज्ञानिक का जो विश्लेषण है परवर्ती काल में वही बाद में बदल जाता है। तो ये कोई भी ये तथ्य को शाश्वत सनातन सत्य नहीं मान सकते, ये परिवर्तन होते रहता है, उसमें कुछ न कुछ बिगड़ते बनते रहता है। इसकी जो धारणाएं अवधारणाएं उसमें और परिणति परिपुष्टि होते रहते हैं। मुख्यतः विज्ञान के नजरों में जो रिसर्च का विषय है वो है पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान। श्री श्री आनंद मूर्ति जी जब दर्शन की बात करते थे तो उन्होंने पहली बार मनुष्य समाज में मनोविज्ञान को भी विज्ञान की शाखा में रखा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ। लेकिन अंततः आज के वैज्ञानिक मनोविज्ञान को भी विज्ञान की श्रेणी में दर्जा दी है। जो आखिरी है अध्यात्म विज्ञान, विज्ञान इस चीज को पूर्णतया स्वीकार नहीं किए है, क्योंकि ये इतने सूक्ष्म है कि इस पर उनका हो सकता है ध्यान नहीं गया, या हो सकता है कि कुछ लोगों ने चेष्टा किया लेकिन बहुत सारी चीजें उपलब्धि नहीं हुई, इस कारण से इसमें आगे नहीं बढ़ पाया। अब जहां तक कि अस्तित्व को प्रमाणित करने की बात है, तो जो पदार्थ हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, उनको तो साइंस आसानी से प्रमाणित कर देते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, जो इंद्रियों के परे हैं, जिसे अतीन्द्रिय के माध्यम से अनुभूति किया जा सकता है, विज्ञान प्राय उस चीज को टच नहीं करता है। तो अब बहुत लोग ये जानते हैं कि जब विज्ञान की भाषा में बात करेंगे तो अगर देखा जाए तो विज्ञान मतलब जीव विज्ञान की जब बात होगी, एनाटॉमी की बात होगी, तो उसमें ब्रेन तो आ जाते हैं लेकिन माइंड कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वैज्ञानिकों को अंततः मानना पड़ेगा कि माइंड भी एग्जिस्ट करता है। अब जिस तरह हमारे पूर्व वक्ता लोग इन पर बहुत सारे अपना मंतव्य और वक्तव्य दिए हैं, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मन का भी एक बहुत स्तर है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि मन का 5 लेयर्स है। वो है काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश, हिरण्यमय कोश। तो जब काममय कोश में मनुष्य का मन रहता है तो वो फील करता है। फिर जब मनोमय में जाता है तो उसमें विलिंग जगता है कुछ करने की, वो समझने लगता है, उसको कुछ न कुछ अनुभूति होने लगता है। फिर अगर वो अतिमानस में जाता है तो उसमें थिंकिंग होने लगता है। जब वो विज्ञानमय में चला जाता है तो डीप थिंकिंग हो जाता है, सटल थिंकिंग होने लगता है। और जब मन अगर 5वां चैम्बर्स में लेयर में जब जो हिरण्यमय कोश में जब पहुंच जाते हैं मन, तो उसमें मनुष्य का पूर्ण विकास हो जाता है, जिसको कि बौद्धिक कह सकते हैं, जिसको कि इंग्लिश में कॉन्साइंस और संस्कृत में विवेक कहते हैं। तो जो इस अवस्था में अपने मन को ले गया, तो उसके लिए ये जो अति इंद्रिय की चीज है, इसको अनुभव कर पाना सुलभ हो जाता है। वो इस चीज को अनुभूत करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। लेकिन
ये वही बात है कि मान ली जाए कि जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आज विश्व में हर जगह ये लोग जानते हैं कि H2O इक्वल टू वाटर। आज भी कुछ ऐसे ट्राइब लोग हैं, फार्मर लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको बोलेंगे कि भाई गैस से पानी बनता है, वो बोलेंगे कैसे मूर्ख जैसी बात करती है, क्योंकि उनके समझ से ये परे, क्योंकि उनका जो बौद्धिक विकास है वो उतना नहीं हो पाया है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज को भी अगर उनको बोलेंगे तो वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते। तो इनके लिए क्या आवश्यकता है कि इनके लिए ज्ञान की जरूरत पड़ता है, उसको अनुभव की जरूरत पड़ता है। अगर मान ली जाए किसी साइंटिस्ट से अगर गांव में पूछ बैठे कि भाई आप बोलते हैं कि गैस से आप पानी बनाते हैं, आप बना के दिखाइए, उनके लिए संभव नहीं है। वो जानते हुए उसको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसके लिए उसको लैब की जरूरत पड़ेगा, वहां उसको जा करके फिर उसमें मिलाना पड़ेगा एक मात्रा के अनुसार, तब वो जा करके पानी बनाना संभव है। तो उसी तरह ये जो आम तौर पर जो बौद्धिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं है, जो कि विवेकी नहीं है, जिसमें बौद्धिक जागृत नहीं है, अगर वो बात करते हैं, अगर उनको आप बोलेंगे कि भगवान एग्जिस्ट करता है, तो वो कुतर्क करने लगते हैं, क्योंकि उनका उतना बौद्धिक विकास नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है कि मैं कैसे परमात्मा की अनुभूति कर सकता हूं? तो इसका ठीक इसी तरह का एक प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी जब वो रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आए, तो नरेंद्र देव ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव क्या भगवान है, अर्थात ईश्वर है? उन्होंने कहा बिल्कुल है। फिर कहा क्या आप उन्हें देखते हैं? बोलते हैं बिल्कुल मैं देख सकता हूँ, जिस तरह के मैं तुम्हें देख रहा हूँ उस तरह मैं भगवान को देखता हूँ। तो फिर सवाल किए कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं दिखा सकता हूँ। तो बोले ठीक है, कल तुम सुबह आना। फिर जब सुबह आए तो उन्होंने नरेंद्र देव को तालाब में के पास ले गया और पानी में ले जा करके उन्होंने कहा तुम झुको, और उसके सर को पानी में डुबा दिया। अब नरेंद्र देव अपनी जीवन रक्षा के लिए उसने पानी से अपने सर को ऊपर उठाने की बार बार चेष्टा करने लगा। थोड़े देर रखने के बाद फिर पानी से गुरुदेव रामकृष्ण ने उसका सर को उठाया, फिर उसके बाद फिर से पानी में डाल दिया। तो फिर इस तरह से वो बार बार नरेंद्र देव चेष्टा करता रहा अपने प्राण रक्षा के लिए। तब रामकृष्ण ने कहा कि जिस प्रकार तुमको प्राण रक्षा के लिए तुम इतने प्रयासरत हो, मतलब तुम इतने व्यग्र हो, व्याकुल हो, उस तरह से अगर किसी भी इंसान को परमात्मा को अनुभूति करने के लिए, चेष्टा करने के लिए जब उसमें प्रगाढ़ ऐसा जग जाएगी, तो वो भी परमात्मा का दर्शन कर सकता है, अनुभूति कर सकता है। तो बहुत सारे चीजें हैं। इसीलिए जैसे कि जीवन में हर लोग प्यार करते हैं, लेकिन आप उसको पूछिए कि भाई प्यार क्या है, तो इसको व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाषा की एक अपनी सीमा है। भाषा अपने दिल की जो भावना है, अनुभूति है, उसको व्यक्त करने का एक जरिया है, लेकिन इसका भी एक सीमा है। तो हर चीज को, सूक्ष्म अभिव्यक्ति को भाषा व्यक्त नहीं कर सकता है। इसीलिए लोग जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं इसकी। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में साइंस इतना डेवलप कर जाए, इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसे बना दे जिससे कि प्रमाणित किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि ये जो जैसे कि शब्द आया है ब्रह्म, अब इसमें कई तरह के, कुछ लोग बोलते हैं भगवान, कुछ लोग गॉड, कुछ लोग ईश्वर, कुछ लोग ब्रह्म। अब इसका हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ है। क्योंकि अंग्रेजी भाषा उतना समृद्ध नहीं है बनस्पत कंपेयर टू संस्कृत, इसलिए इंग्लिश में प्राय शब्दों का वो सटीक शब्दार्थ नहीं है, शब्द नहीं है। जैसे कि ब्रह्मांड का, अब उसका इंग्लिश में यूनिवर्स, जिसका कि एकदम लेना देना नहीं,
ब्रह्म का जो अंड है, अर्थात ये जो सृष्ट जगत है जिससे कि इसकी परिकल्पना हुई है, वही ब्रह्मांड है, वही सब। तो अगर सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, तो इसका जो रचना करने वाला, सृष्टि करने वाला, वो ब्रह्म कहीं कहीं है। वो सूक्ष्म है, उसको आज हम नहीं समझ पाते हैं, या समझने के बावजूद भी हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते, ये अपनी मजबूरी है। शास्त्र में कहा गया है कि ईश्वर क्या है। शास्त्र में कहा गया है ईसती जैसे ईश्वर। दुनिया की जड़ चेतन तमाम सत्ता का जो नियंत्रण करता है वही ईश्वर है। ब्रह्म क्या है? शिव सत्यात्मकम ब्रह्म, मतलब आनंद मूर्ति जी ने कहते हैं शिव और शक्ति की जो मिलन है, मिश्रित नाम है, यूनियन नाम है, वही ब्रह्म है। और श्री श्री आनंद मूर्ति जी क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की जब चर्चा की, उसमें बिल्कुल साइंटिफिक और व्यवहारिक रूप से उन्होंने विस्तार से समझाया है कि सृष्टि की कैसी रचना हुई है। और उसी में उसने कहा है कि शिव शक्ति विभागेन कल्पना जायते इति सृष्टि। तो चूंकि यहाँ बहुत समय नहीं है, इसलिए मैं अपने वचन को विराम देता हूँ। अगर फिर मौका लगेगा, टर्न आएगा, तो मैं कुछ ना कुछ और मैं बताऊंगा। नमस्कार। नमस्कार, आप सब लोगों को धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन. Ananta, I think we will take some questions from you. I am going to give you a quick kind of wrap around as to what everyone spoke. Dada Nitya Sundaranji talked about how people have understood the concept of Brahma in different scriptures, and also in reference to how Baba has explained Brahma. Sister Vinita ji, she also talked about how the form of Brahma is a pure consciousness, pure happiness, pure bliss. And she talked about experience. One needs to experience, go deep within oneself, and need to know that. And this is something which Dada Nitya Sundaranji also told, that it's difficult to define by words. Dada Purnadevananji also took a view on the concept of Brahma from a perspective of how different people have explained it, and how human beings have developed certain capabilities to understand some things, and certain things they cannot understand, especially when the concept is easy to understand. When it is subtle, it becomes difficult, and when it is really, really the subtlest, it becomes even the most difficult to understand. So the idea of God is the subtlest. So this is kind of, more or less, I just wanted to give a kind of wrap around. So your questions, please. Right. Thank you. Thank you for giving me that synopsis, and thank you for including me in the panel. So I would just like to take the time to backtrack a bit and get to know some of the basics around our discussion around the question, does God exist or not? So Lalit Parmuji, you mentioned Nietzsche and Nietzsche's idea that he was famous for saying God is dead. Nietzsche is credited as, his full name is Friedrich Nietzsche. He's credited as one of the first atheists in the world, but Nietzsche wasn't really concerned about the existence of God, but rather that the belief in God and everything that comes along with a belief in God is problematic for a number of reasons. One time, when questioned about this, Nietzsche said that even if God were to walk into the room and he were to be proven his existence right then and there, Nietzsche would kill him. The death of God to Nietzsche wasn't that God ceased to exist. Rather, he meant that all of the wickedness and the corruption of Christianity was based around a lie that connected virtue with God, and this connection of virtue with God gave the church an authority, and he called that authority hypocritical because of the ways that they were acting. Nietzsche's big idea goes much deeper than not believing in God. His extraordinary contribution was to design a form of redemption and salvation for a world that had gone beyond belief, a world that had gone beyond good and evil and simple dualities. Now, Nietzsche's world was a world in which science and industry was changing the world very rapidly. Science is a method primarily. So we know it as the scientific method. The scientific method entails forming a hypothesis, testing that hypothesis, and then arriving at conclusions based on the results of that test.
in this world that is changing so rapidly for Nietzsche, dogmatic faith alone was causing a problem, and the problem that rationalism, i.e. science, could not solve by its own. So science is about asking the right questions, and science is a way of asking questions in a reliable way, that if everyone follows the same format, we can arrive at what scientists refer to as objectivity, that you can arrive at the overall truth by asking a standardized method. Now, that being said, maybe science can't be used for proof of God, but it certainly can help develop an understanding of experience based on what every panelist has said, that Brahma, God, Paramatma, is equivalent to the ultimate, and the ultimate is manifested in different aspects, and it's beyond conception, to use the words of Dharma Premanandaji, and that using other people's words, that finding God within you, and you can know God, and God is an experience. It is a taste of this blissful state, like an ocean of our primordial creation, and that you can come to experience God, but maybe you cannot come to give proof of God. And so if feeling a connection to God is an experience, how then, the question is, to establish this experience, to have this experience? In this way, I see science may be a path to the spiritual, because science can be used in a number of ways to help the spiritual life. Science can be used to fine-tune our understanding of the mind and the functions of the brain. It can be used to see how the brain functions and possibly the mechanisms behind why meditation can change the way in which we experience our phenomenal reality. Likewise, gaining knowledge grants an appreciation and respect for all things in the universe. And if we are to equate God with God the Creator, then developing an appreciation for all of God's creations could be seen as a path to getting closer to knowing who the Creator actually is. Belief and disbelief are irrelevant in this matter. Whether you believe in God or you don't believe in God is not a question of experience, it's a question of knowledge. It's what you do that really matters. And so my question that I have for all of the panelists is, all of this being said, there are still many scientists that claim God doesn't exist. And on the other hand, there are many sages and people that claim that God does exist. Does everyone think that science is fundamentally atheistic? So theistic meaning it believes in God, and atheistic meaning it does not believe in God. If I were to ask you, is science conducive to the belief of God, or is science atheistic? I am very curious to hear what your answers are. Thank you very much. Okay, so thank you, Brother Ananta, for your question. I'll open this question for everyone. I'm saying that maybe we take 3 minutes each on this one. Who wants to start first? Anybody has liking to start first, or maybe I can suggest Yeah, you may, please. Should I start, you're saying? Yeah. I was going to ask your name, Dada. I can also start. I can also start. You want to start, you start. Okay, then maybe after me, you can, Dada, you can say the next. And then others, everyone I'll call. Okay, so how do we understand certain things? As per science, we usually understand certain things by something called pramanam. Pramanam means proof. If we have a proof, and proof in the sense that we can sense some things using our sensory organs, like we can touch, feel, we can smell and all that, either using the senses or some kind of equipment, enhanced senses. Through that, if we can understand or kind of get in direct contact with, then we call the pramanam, it's a proof. Science understands things in terms of proof, but there is one another way to understand certain ideas, and that is through anuman. Anuman means some kind of imaginative, analytical thinking, or you can say hypothesis. For example, Dadaji, Dada Nisunanji mentioned Isaac Newton. He saw the apple falling down. Everybody saw the apple falling down, but nobody thought the way he did. So he was able to imagine that there is some force, something is pulling it down. So that force, that anuman, or some kind of imagination of the mind, combined with a logical hypothesis, that's what formed the basis of
making him understand that I don't know whether it's what it is, but I know there is something. It's like in the maths, you have X. You don't know the value of the X, but you know that there is some value. You just don't know how much that value is. Similarly, over the time, people using this anuman, means guessing, by observing, imagining, and guessing, they were able to make that there is existence of some force, some entity, but they don't know what it is. And that gave birth to different kind of religions and dogma and fear. People started to imagine that God is this, God is that. But because there was no ultimate answer, the intellectual exploration continued. And even until today, this exploration keeps on going. But one of the most you can say the formidable concept which has been formed about understanding God is that the theory of cause and effect, which forms the basis of science, and then the theory of controller and controlled. That's another basis of how people have thought about the God. Means this universe has a pattern, it's moving in certain pattern which no one can change it. So there must be some force which is controlling. Similarly, when every object is there, the object has to have a nucleus. So they thought that this universe is very big, huge, very big. But the question is where the universe ends, where the universe ends. And the point where universe end, what is beyond that? Nobody can think about that. But science knows that there is something. It doesn't know what is that thing. So the other idea that because every object has to have a nucleus, this universe also has some nucleus. We don't know where is that nucleus, but at least we have anuman. We have imaginative hypothesis calculation that there is a nucleus. Similarly, we know that there is all these three ideas of cause and effect and controller and the controlled and object and nucleus. All of these things combined together form the basis of modern day concept of God or Brahma, whatever it is today. This is definitely an intellectual hypothesis. And when people do meditation and spiritual practices, they go deeper into this idea. But I will conclude by saying that imagine one entity which is also the cause of all the effect. The same entity is also the controller of everything. And the same entity is also the nucleus. Can we imagine one particular entity which has all of these three things, that causes everything, that controls everything, and that also is the nucleus? So that entity could be anything. You can call God, you can call Brahma, you can say Paramatma, you can say Allah, you can say Ishwar, whatever you want. But that particular entity is there, which means hypothetically we can prove through using Anuman, means hypothetical imaginative calculation, that yes, cause and effect, controller and the controlled, object and nucleus, God does exist. No one can deny that. So this very concept, proves that there is no way of denying God. No, it's beyond belief and non-belief. It does exist. We don't know what it is, but it does exist. And now with this, I'll continue. I'll take it forward. You said rightly so many things. Coming back to the question which Mr. Brother Anant raised, and he said a lot of good things also. A lot of relevant things regarding the topic and subject which we are discussing. And I would say that yes, science is discussed these days because we are living in a scientific era. Science by itself has created a world where the scientists have explored the matter in such a way that they have reached energy. That's why we are discussing science, whether science is conducive or whether science is non-conducive for this question. In one line, I'll say that the scientific temperament has led a lot of intellectuals, lot of thinkers to move away from God. Yes, the number of atheists in the entire globe has increased. And in past 50 years, I would say 50 because I have crossed 55 now. So I generally come across many people who are scientifically rational and they have become atheists. They are anti-religious. There is a huge movement in India also where they say that the ideas which are around God or around religion, they use the word religion,
Those all ideas are very dangerous to the society, and it is politically connected, and politicians make use of it and all that. That is how general masses are being controlled and all that. They have a lot of things to say against it, but that's one aspect. In one line, yes, scientific temperament has led to atheism. It's true. But if it has led to this thinking, science has the power to rebuild what we have lost. With the scientific temperament only, we can rebuild what we have lost. Regarding this, I have something else to say, which is connected with the original topic, which I didn't say in my previous talk, that humanity is not only intellectual. There are very few people who are interested in philosophy, in wisdom by words, in scriptures. We'll classify such people who are guided by intellect. So they are intellect dominated people. There are many people who are emotionally dominated, and there are many people who are guided by their instinct. Generally, we find these three kind of people: guided by instinct, guided by emotion, guided by intellect. A man guided by emotion will have a different concept of God, would like to get connected with God emotionally. And this happens with whether they are good sadhaks or not. It happens like this only. One may worship Hanumanji all his life and will get a lot of inspiration and lot of connectivity, lot of love and even devotion. There is no big deal about it. And we have in India, we have a lot of such stories, and even in West, we have a lot of such stories that people have gained a lot of inner strength by just being in love with Jesus. And same is with people from other religions. So for them, God exists in this form. They are beyond any kind of philosophical wisdom, any kind of philosophical discussion, or any kind of scriptural discussion. Coming back to one of the important saints of India, with Dada Nityanand said about Ramakrishna ji, he was completely an uneducated person. An uneducated person forgets science and all. He could not even write his name in his native language, which was Bengali. But he was a giant in realization of God. Now, how does this happen? There is no science, there is no psychology, there is no rationality. He was a foolish person for many people. He, before eating, he used to bring that food in front of Kalima and used to first make the mother eat the food and then eat himself. So there is another extreme, and there are many people like that. We do not have people like Ramakrishna so much these days, but there are many people who inwardly are so emotionally charged up regarding the idea of God that any kind of scientific thinking will not create disbelief in them. Now, because the main society, the educated society, is scientific, and science is the ruling law or the ruling subject now, because we see everything connected with science, whether it is mobile, whether it is this Zoom app, or whether it is a car, or whether it is anything. We are living in a scientific era. So that is why we have to talk scientifically regarding God also. That is our, what do we say, that's our necessity, or that's our requirement now. Otherwise, we do not have any other way. Language has its own limitations. Language cannot express such sublime ideas in a very clear-cut way. That is why ancients used symbols. Now, coming back to the subject of God exists or not, I would say that anyone who is a seeker of God, anyone who just has a 5% interest in knowing God, when he begins, he will always begin in a negative way, which in Indian Upanishadic terminology is called the path of neti neti, not this, not this. Yes, we have to say all the time that my indriyas or my sense organs, this is not God. My mind, this is not God. My intellect, this is not God. One has to keep on searching, one has to keep on answering. This is an inquiry. This can be called as a scientific inquiry or a rational inquiry where reason is dominating. But an emotionally charged person can get connected with God if he gets a mantra, or if he is told that you worship God in this way. One can get connected. One can transcend the mind and intellect and reach those
subtle layers in one jump. There is a beautiful story by Tolstoy. It's a long story, but it's a story called as Three Hermits. Three hermits and one Christian missionary. One Christian missionary went to a village where these three hermits were very popular, and all villagers were to say that these are saintly people, you must meet them. And this Christian missionary went to these three hermits, three sages, and asked them, how do you pray? How do you pray, Lord? They told him that this is the way we do this, we say this. That Christian missionary said, no, you're doing it wrong way. This is not the right way. Your hand should be like this. You should kneel like this. You should say these words, and then the prayer will be complete. They said, very nice, we are happy. And that Christian missionary goes away. And when he goes away, he's going in a ship. And after some time, he sees a very straight light on the water, on the sea. And those three sages, those three hermits are walking on the sea. They are running on the water. And some people are actually surprised, and they are in awe, and they are saying these three people walking on the sea. And the missionary also gets up from the ship and sees that these three people are coming, walking, and they are shouting to this Christian missionary, sir, please listen to us, please listen to us. And the missionary asks, what? They are asking the missionary that, what did you tell after that? What was the prayer exactly like? Now this missionary was completely zapped. He saw these three sages so innocent. They had the power of walking on the water without getting drowned, just because their faith was of such high nature. And then that missionary told them that you don't need to learn any prayer. You're already on the way. God bless you. I'm a kid in front of you. He knelt down and said that you have nothing to learn from me. Rather, I should learn from you. It's a very famous story of Leo Tolstoy, and this explains what faith can do. And now this explains the answer. This explains the question whether scientific temperament is important in realizing God or not. Scientific temperament is important for general masses, but for realization, it is the emotion that will matter. It is the higher emotion, which can be called as a devotion, that matters. But for discussions, for general IQ, we need a scientific inquiry, and we need a scientific definition, which is more important. Otherwise, more people will become atheists. More people will move on the other side of the fence. Here, I would like to conclude, because we don't have much time. Otherwise, one gets excited in talking about such things. So I would like to sum up and ask the next speaker to take charge, which I believe is... Yeah, I'm requesting Dada Nitya Sundaranji to speak next, and then Pundevanji after that. नमस्कार। किसी कवि ने कहा है, अगर हम दूध नहीं पचा सकते तो इसका मतलब दूध खराब नहीं, पानी पीने से उन्माद आए तो इसका मतलब पानी शराब नहीं, प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाना इंसान की अपनी कमजोरी है, इसका ये मतलब नहीं कि सवाल का जवाब नहीं। तो हर सवाल का यहाँ जवाब है, बशर्ते कि हमें ढूंढने की जरूरत है। जैसे कि मन का जो चैम्बर्स एंड लेयर है, मन की जो अग्रगति होती है, तो जो साइकोलॉजी की बात कहा जाता है, मनोविज्ञान, आज मुख्यतः 4 प्रकार के स्टेजेस हैं: कॉमन साइकोलॉजी, बायो साइकोलॉजी, योगा साइकोलॉजी, एपेक्स या पिनाकल साइकोलॉजी। तो मनुष्य जब योगा साइकोलॉजी के स्तर पर पहुंच जाता है तो उसे सृष्टिकर्ता एवं सृष्टि के जो करने वाले रचयिता है उसके बारे में उसको अनुभूति होना शुरू हो जाती है। और जब वो पिनाकल या एपेक्स साइकोलॉजी में, मतलब वो पूर्ण
विवेक हो जाते हैं, बुद्धिपूर्ण जागृत हो जाते हैं, जब उनका हिरण्यमय कोश में मन अवस्थित हो जाते हैं, तो वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो कुछ भी समझने और जानने और देखने की क्षमता है। भगवान अर्थात ईश्वर है कि नहीं है, तो इस प्रश्न का मेरा आंसर है कि वो है। अब जैसे कि मान लीजिए ये जो इंद्रियां हैं, मान लीजिए ये जो जिससे हम देखते हैं, इनका भी सीमा है। हम अपनी आंखों से करीब हो सकता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर से परे है तो हम उसे नहीं देख पाए, क्योंकि हमारी ये जो चक्षुष इंद्रिय है, इसकी एक सीमा रेखा है। इससे अगर कोई चीज परे है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मेरे अनुभूति के बाहर है, मैं उसको देखने में अक्षम हूं। तो इसीलिए परमात्मा भी बहुत ही अति सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है। इसलिए इसको लोअर माइंड से नहीं देख सकते। जब तक मन की अवस्थी अपर माइंड तक नहीं पहुंचती, तब तक संभव नहीं। अब दूसरा है कि हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि बहुत लोग उदाहरण देते हैं कि जैसे कि दूध को देखने से पता नहीं चलता है कि उसमें मक्खन है या घी है, लेकिन जब उसको प्रोसेस के द्वारा उसको हम चर्न करते हैं तो उसमें मक्खन प्राप्त होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसकी जानकारी जिसे है और जो करने में सक्षम है, वो मक्खन प्राप्त कर सकते हैं। और जिसको ये अनुभव है, जिसने ये अनुभूत किया है या दृष्टि गोचर हुआ है जिसके नजरों से, तो वो इसको स्वीकार करेंगे। लेकिन जो कभी इसके बारे में सोचे नहीं है या कभी देखे नहीं, वो तो बिना सोचे समझे इनकार कर देते हैं। तो ब्रह्म के बारे में भी वही लोगों की धारणा है। अब साइंस की बात करते हैं कि साइंस अभी भी इतना एडवांस माने जाते हैं, लेकिन वो किसी भी लेबोरेटरी में ब्लड तक नहीं बना पाया। साइंस की ये अभी तक क्षमता है कि ये जो ह्यूमन जीन्स है, डीएनए है, इसकी वो 2 से 3% उसकी जानकारी हासिल कर पाया। बाकी 97%, 98% उसके लिए अज्ञानता क्या है। तो इसीलिए साइंस को बहुत कुछ डेवलप करना भी बाकी है। इसीलिए जो अध्यात्म विज्ञानी है, जिसे हम ज्ञानी, गुणी, साधु, संत या ऋषि, महर्षि कहते हैं, उसने इस चीज को अनुभव किया है। इसलिए हम उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो अनुभूति है वो गलत है। जैसे कि मान ले जाए कि कोई भी विद्यार्थी, मान ले जाए कि नर्सरी क्लास में है और उसको एकाएक यूनिवर्सिटी क्लास में बिठा दिया जाएगा, तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति खराब है या वो जो प्रोफेसर या लेक्चरर हैं वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल बेकार या बकवास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि बोलने वाले की जो तथ्य है उसको समझने के लिए जो एक दर्शक को, एक श्रोता को, जो एक स्टूडेंट को, जो एक विद्यार्थी को वो लेवल होना चाहिए, मन का स्तर होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। लेकिन वही अगर नर्सरी का विद्यार्थी जब ग्रेजुअली पढ़ते हुए जब वो अग्रसर होते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी के क्लास सुनने और समझने में ही नहीं सक्षम होते, बल्कि वो वैसे उससे भी बेहतर क्लास देने में सक्षम हो जाते। तो ये प्रगतिशील है और दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। और जो इसका मतलब देखिए, जिस चीज को हम नहीं देख पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, उसको हम इनकार नहीं कर सकते, इसलिए सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अब रही बात कि अगर ईश्वर है तो इसकी प्राप्ति कैसे हो सकता है, तो जो लोग इस रास्ते पे चल करके ईश्वर की अनुभूति प्राप्त किए हैं, उसने कुछ अपनी
चीजों को शेयर किया है समाज में, संसार में, तो वो है मोरल प्रिंसिपल। खान पान, मोरल प्रिंसिपल में खास करके यम नियम आ जाते हैं। उसके बाद अपने स्वस्थ शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद प्राणायाम, व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो ये तमाम तरह का चीजों की जरूरत पड़ती है। और आखिर में है मेडिटेशन। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जो बेस्ट सिस्टम या प्रोसेस है उसको हम लोग मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन क्या है? क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माइंड, दैट इज एक्चुअली मेडिटेशन। हमारा जो मन एक कॉन्शियस से जब सबकॉन्शियस लेवल में, उसमें भी ऊर्ध लेयर में पहुंचता है, तब जो अनुभूति प्राप्त करते हैं वही समाधि का भी स्टेज होता है। उसमें बहुत सारी अनुभूति प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और सबसे सरल और आसान तरीका है सर्विस टू हिज क्रिएशन, क्योंकि उसकी क्रिएशन को जब हम नर को नारायण मान करके, हर जीव को उनकी ही सृष्टि रचना मान करके, जब उसमें हर चीज में हम ब्रह्मी भाव को आरोपित करके जब हम उनकी सेवा करेंगे तो उनकी कृपा होगी। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जानहि जेहि देहि जनाई, जानहि तुम ही हो जाई। जब उनकी कृपा जिस पर होती है तभी वो उनको समझ सकते हैं, उसको अनुभूति कर सकते हैं, और उसकी कृपा पाने के लिए कृपा पात्रत्व की जरूरत है। नमस्कार। The next is going to be Dada Pundevanand ji. Yeah. Actually, the subject is discussed well, but I think Brother Ananta's question is partially answered by Dada Dharam Premanand ji, partially answered by our Lalit Parimu ji. But I would like to add in that his question is whether science is conducive or science is atheist. So let me first define what is science. So far, Anandamurti ji says that science is not a book, science is not a person, but science is rational and methodical flow of knowledge, which leads you from known to unknown. So science is not at all disturbing or hurdle on the path of spirituality. Neither science is atheist. I have not seen in any book that a particular scientist has said there is no God. I have not seen in any book. I have not gone through any book. Maybe some philosophers like Nietzsche and Karl Marx and Charbak, the philosophers, they have talked about the atheism. But science has never talked about that there is no God, something like that. Because when there is a constant flow of knowledge and which taking you toward subtlety, which take you from crudity to subtlety. Because there was a time when people used to say that yes, the sun is revolving around the earth. But according to scientific research, now it came to the clue that no, it is the sun that is the nucleus of the solar system. And there was a time when atom was accepted as a subtlest particle. But now we can see as atom is not the miniature form of the object, but even in an atom, there are more than 200 subtle particles like quark and neutrinos
neutrinos are more subtler than the proton, electron, and neutron. A neutrino can move without any hurdle. Neutrino doesn't need any influences to move. So science is the methodological knowledge. That is taking human knowledge from known to unknown. So that is the science. So science is neither disturbing nor atheist, but it is the science, not only physical science, not only the chemistry, physics, and biology. Science includes psychology. Science includes parapsychology. Science includes spirituality. Soul of science is spirituality. Science of mind is the psychology, and science of physical world, that is the physics. So science doesn't mean only the physics, but even the physics is leading human being toward the truth of life. So science is helpful because science is rational, science is logical, and science is methodological, and science ultimately helps people to get the proper track toward the subtlety. Maybe the physical science is now unable to answer the truth of unseen force, but they have not denied the existence of unseen force, like Tolstoy, Einstein, Newton, even a great psychologist, Dr. Freud. He has accepted the existence of mind. It is Freud who said that there are 3 layers of mind. He didn't talk about the brain. He talked the conscious, subconscious, and supercausal or causal mind. So science is really progressing, and science is, and some people say we are in the age of science. Actually, it is sometimes ridiculous to say, because the cause and effect theory was introduced long before by Maharshi Kanad, and he has explained very lucidly the science of creation, and he has taken the support of physical science. At the same time, he has very clearly said, yes, something cannot come out of nothing. It means if we see something, some reaction, some or whatever you can say, when we see the effect, it means there is a cause. So without cause, there cannot be effect, or if there is an effect, it means there must be some reason, there must be some cause. So that very cause is the unseen force, as the Dharam Premananda said. He's a force, he's a power, he's a controller. At the same time, he's attracting everything, he's the cause. At the same time, he is the embodiment of bliss, he is the embodiment of conscience. So it is the science. With the help of science, human can, if we follow the path of rationality and follow the path of realized souls, the rishis, maharshis, then alone to the realm of sight, and through the psychology, the concentrated psychology, we can transcend from the physicality to psychic world, and psychic world into the unseen, the causal world, the realm of the conscious, pure godlyhood. That alone can be achieved through the methodology, and that methodology is the sadhana. That methodology is the intuitional science,
And through the proper practices, we can reach to that unseen course and realize the truth of life. Thank you so much. Namaskar. Okay, I was on mute. Sorry. So I'm in favor of going towards conclusion of our discussion today. So I'm going to request everyone to probably give your best conclusion in very short time. So before that, I also wanted to wrap up in my mind what I had so far. In my earlier talk, I was saying that by even using our intellectual hypothesis, we should not deny any possibility. If anybody wants to understand the idea of Brahma through contemplative thinking, go ahead. If somebody wants to understand the idea of Brahma through karma yoga, go ahead. I mean, if somebody wants to do purely through devotion, although Baba has said that devotion is action minus knowledge. So if we don't do action, we cannot have automatic devotion. So all these ideas that the cause and effect and the controller and controlled, an object and nucleus, even if we'll think scientifically, there is no way for even the modern science through this hypothetical conclusion that we cannot deny the existence of supreme force. It is always there. All of the panelists, they are saying the same thing. The other thing is that because nobody knows, we know that it exists, but we don't know what it is. It gave birth to a lot of dogma and a lot of God-fearing people. They know that there is God, they know Brahma is there, but how the Brahma, what is the color, what is the shape, how big is the Brahma, nobody knows. So everybody started to form their own imaginations, and most of these imaginations were guided by fear, that God is something very fearful. So it gave a birth of Daravna Bhagwan, like Sani Devta and this kind of Devta. Means people are so fearing. They morning time, they go and break a coconut and do some formality so that their day is not spoiled. Or businessman goes to shop and wants to do some worship because otherwise God will do. I also want to bring, why not? I also want to bring this in context of our Guruji's, Sri Sananurji's belief. There are some people who follow, they think that, oh, today if I don't do sadhana, then today my job will be spoiled. No, we should not fear God. So that God-fearing mentality came up because we don't know what that existence is. The other one is Rakhwala Bhagwan, the savior God. And that is very prevalent in Christianity and many other religions also. And in India also a lot of people practice the savior God, Bhagwan Raksha Karega, the God will save me from all kinds of trouble. So the imagination, people did not know the existence of God. They started to form all this imagination. And most of these imaginations was based on their fear and based on their needs. But my Guru Sri Syanand Murti ji gives a very conclusive, definitive direction for all the intellectuals, all the scientists, all the thinkers to think in that direction. That if at all we have to make a conclusion, analysis of what God is, then that analysis has to be done through a contemplative process, not looking outside, but looking inside. And in that, he says very clearly, no Daravna Bhagwan, no Rakhwala Bhagwan. We should be loving God, beloved God. So that connection, that emotional, psychological, psycho-emotional connection, my Guru Sri Anand Murti ji has suggested. So that's a kind of very practical approach of how we can achieve. So in conclusion, all of the panelists, basically they are coming to same kind of thought wave that God does exist. We know that at least through our hypothesis, we know that God does exist. How do we know the God? Not by fearing, not by imagining that he's savior, but by loving, developing that inner love and connection. This is my conclusion. I'm requesting all other panelists also maybe take a minute or maximum 2 minutes and draw your conclusions, and that way we can end our discussion for tonight. And next, Yes, I may begin. I think Vinita Didi, she has not spoken. He has not said for a long, yeah. So Vinita Didi, you are first and then we'll go on. Are you there? Are you speaking? Vinita Didi, आपका turn है.
कोई बात नहीं, she can speak after. I'll take just Yeah, 1 minute. Dada, I'll you take go just ahead. 1 Go minute. ahead. I would like to conclude with 2-3 points as quoting Shri Shri Anand Murthy ji. He once said that God, God means generator, operator, and destroyer. So this is one definition in the concluding remark. And another 2-3 points regarding the main topic is that the search for God is a completely individual journey. Another point, it has to be found within. It cannot be found outside. There is no way that you can find God outside. So it's very futile exercise to search for God in the external world. The only way to look for God and find is within oneself. Third point is that God lives on 7th floor within you. So those who know, they may think on it, they may ponder on it. He doesn't live in the 6th floor or the 5th floor or the 4th or 3rd or 2 or 1. We have 7 floors. Human mind body structure is made of 7. It's a 7-storied structure, and on top God lives. Yes, God lives, and he can be found. You can meet him on the 7th floor. If you live in the basement, if you spend entire your life on the 1st floor, God is away from you. If you live on the 6th and the 7th floor, there is a chance that you will meet him. These are my concluding remarks. Thank you. Thank you. Thank you. So maybe Dada Nisundaranji, your concluding words. Yes, as we know, science can research, but science cannot create any original things. So science has to accept that if there is something original, who is the creator? And for me, creator is the God, creator is the Ishwar, creator is the Brahma, and that system, as our many speakers they spoke, that there's a different type of devotion. So there's a first one is a Dasya Bhav. People are thinking, oh, he's a master and I'm a servant. It is also lowest category of devotion. Then second category is Vatsalya Bhav, means there's a like uh, think like like God is and like parents and children. This is called Vatsalya Bhav. And the third is a Sakha Bhav. Sakha Bhav means friendship. So even this is the third highest category of the devotion. But the last one is a Radha Bhav or called Madhuri Bhav, where there is no differences. So God is like a Priyatam, God is like a lover, God is everything. So when people will develop the feelings for the Lord, so they will feel oneness, and then it will be the, as a resultant, there will be realization of truth, and that is the God. Thank you. विनीता दीदी आप लाइन पे हैं? हेलो विनीता दीदी, आप लाइन पे हैं? उनका साउंड शायद कहीं म्यूट पे तो नहीं है, अभी भी कनेक्ट नहीं हो पा रही. तो आप देवानंद दादाजी आप कंक्लूड करिए नेक्स्ट कंक्लूजन. ऐसे ईश्वर तत्व के बारे में हम सब ने बहुत ही लॉजिकली रैशनलिस्टिक व्यू पॉइंट हम लोग रखे हैं. और फैक्ट यही है कि ईश्वर की प्राप्ति जो है बेसमेंट पे बैठ के तो होगा नहीं भाई. 7th 6 सीढ़ी को पार करके, माने 6 सीढ़ी पे जाने के बाद वो एहसास करने लगेगा यस है. बेसमेंट पे रह के 6ठा सीढ़ी में क्या है वो पता नहीं चलेगा. और 6ठा सीढ़ी तक पहुंचने के लिए जो कोशिशें हैं, जो प्रयास है, जो सिस्टम है, वो योग है. योग के माध्यम से, योग ही एक ऐसा साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है जिसके माध्यम से इंसान उस परम चेतना, लव पर्सनिफाइड जो एंटिटी है,
उसको समझ सकते हैं। और योग भक्तिहीन नहीं है, योग कोई ड्राई प्रैक्टिसेस नहीं है। आनंद मूर्ति जी ने योग में भक्ति रस को पिरो दिए हैं, क्योंकि बिना प्रेम के ईश्वर प्राप्ति तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो तो परम आकर्षणीय सत्ता है जो संपूर्ण दुनिया को आकर्षित कर रहा है। और जब तक हमारा आकर्षण उनके प्रति नहीं होगा तो आकर्षण ही तो प्रेम है। जो दो चींटियां एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, दो पशु पक्षी आकर्षित होते हैं, इस दुनिया में इनएनिमेट वस्तु भी एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। सब में एक मैग्नेटिक फोर्स है। तो वो जो सुप्रीम मैग्नेटिक फोर्स है, वो सुप्रीम कहा जाता है एम्बोडीमेंट ऑफ अट्रैक्शन, एम्बोडीमेंट ऑफ लव, और वो प्राप्त सिर्फ प्रेम से ही संभव है। प्रेम मिश्रित योग, और जहां प्रेम है वही भक्ति है, जहां भक्ति है वही मुक्ति है, वही प्राप्ति है, वही विजय है। धन्यवाद, नमस्कार। विनीता दीदी, आर यू कनेक्टेड? अभी आप कनेक्टेड हो गई हैं दीदी? अगर आपको आवाज सुनाई दे रहा है तो आप एक बार लॉग आउट करके फिर से कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका आवाज नहीं आ रहा है अभी भी। सो इन द मीन वाइल she may not connect, she's trying probably. So Ananta, you know, I think you are getting a sense of what we have come to, some kind of conclusion. So we want to hear your conclusions also from the discussion of today. So maybe like within a minute, if you can bring your thoughts. Sure. I'd love to bring this topic to discuss to a conclusion. So I'd just like to say, first of all, Sri Sri Anandamurti's ideas are profound and very precisely and skillfully combine science and spirituality. So I feel very lucky to be in the presence of students of such a realized master. In the panel discussion, I heard a lot of mention to God as a sort of experience of the divine. And so a soul of science is spirituality, leading to the truth of life, or leading to a primordial unseen force. Of all this, I want to know more about this mystical unseen force that seems like the kind of heart of the discussion here. And so if I want to understand God, one theory that has shaped my belief on how God is connected with the idea of the sacred space, sacred time, and especially from our discourse, sacred experience. So maybe I can understand God by understanding experience. One of the first theorists of religion is a guy named Eliade. He formulated a theory that all religions, especially theistic ones, draw a sharp distinction or divide between the sacred on one hand and regular or profane on the other hand. Eliade's understanding of religion centers on this concept of the sacred. So from the perspective of a religious thinker, sacredness gives structure and orientation to the world. It establishes a sacred order and simultaneously constitutes a break in the continuity of mundane space and time. The breaks give order and symbolic meaning to geometry, to space, in the same way a mandala is designed, in the same way that Dada's explanation, Dada Dharma Premanandaji's explanation of God as a nucleus is sort of centered around a specific sacred point. The profane space of non-religious experience, on the other hand, can only be divided up simply geometrically, simply scientifically speaking. It is no qualitative differentiation from the rest of experience, and hence no orientation and no virtue or its inherent structure. Thus, profane or regular space and time gives us no pattern for our sorts of behavior. On the other hand, contrast amounts to a revelation of an absolute reality, an ocean of primordial being, opposed to the non-reality of our surrounding experience. As an example of that, you might think of Radha experiencing Leela in the presence of Lord Krishna, that she was just completely unable to control her experience because of her experience of God. In our discourse, I also heard a few times reference to God as the creator, and that we know this through the creation myths and stories from our respective cultures.
Eliade noted that in societies, myth represents the absolute truth about primordial sacred time. According to the myth, this was the time when the sacred first appeared, establishing the world structure. Myths can claim to describe the primordial events that made society and our world which they are. Eliade argues that all myths are, in this sense, original myths. Myth, then, is an account of creation. And if God is the creator, myth is another way that we can understand the sacred. Many traditions believe that the power of a thing lies in its creation. The first thing that was ever created is the most significant. And so I kind of want to conclude this whole discussion with asking a question maybe for next time. Do you think that this distinction of God as sacred is a valuable distinction? And what is a sacred experience for you? And in other words, what distinguishes a sacred experience from a religious experience? Thank you very much. Namaskar. Namaskar, Ananta. We have noted your question. We will definitely bring up in our next panel discussion. So Vinita Didi, are you connected? Namaskar, Dada. Can you hear me? Yeah, we can hear you. So now you are the last one to give your conclusion. So please go ahead. We would like to hear from you. Thank you, and very sorry because my internet is creating so much problem. So I'm really very sorry. I could not connect before. जैसा कि सबने अभी कहा कि भगवान हैं, गॉड एग्जिस्ट करते हैं और कुछ लोग उनको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। पहले भी बहुत सारे जो विचारक समाज सुधारक आए, उन लोगों ने जैसे कार्ल मार्क्स और उनके लाइक माइंडेड और लोग भी, जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, धर्म एक अफीम है या इस तरह की बातें, तो एक्चुअली वो सिर्फ समाज को, उन्होंने समाज में व्याप्त जो आडंबर और डॉगमा है उसको ही भगवान और उसी को धर्म मान लिया और वहीं तक अपने आप को सीमित रह गए। वो उसके ऊपर जानने की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने अपनी क्षमता का विकास ही नहीं किया कि वो समझ पाए कि वास्तव में भगवान है क्या, वास्तव में गॉड क्या है, ब्रह्म क्या है, वो जानने की कोशिश ही नहीं कर पाए। और बहुत सारे लोग जैसे कि महात्मा बुद्ध ने भी कहा, कभी आत्मा परमात्मा उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया, इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन उसकी वजह ये थी कि जिस वक्त महात्मा बुद्ध इस धरती पर आए उस वक्त आत्मा और परमात्मा के नाम पर इतना शोषण हो रहा था कि आम जनता बहुत आहत थी। एक बौद्धिक संकट के दौर से मानव समाज गुजर रहा था और वो एक ऐसे रास्ता, एक ऐसे दर्शन की खोज कर रहा था जो कि आध्यात्म पथ को सुगम कर सके और ये जो आडंबर है इससे मुक्त कर सके। और बुद्ध देव ने वही दर्शन दिया। उन्होंने तृष्णा को दुख का आधार बताया और दुख को सारे प्रॉब्लम्स का जड़ बताया और दुख से छुटकारा पाने का उपाय बताया। एक्चुअली उन्होंने बताया कि इंद्रियों पर नियंत्रण करके कैसे हम दुख से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन जब मन इंद्रियों पर के प्रभाव में ना हो करके इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है तो वो कहाँ जाएगा? वो स्वयं सीधे आत्मा के सानिध्य में जाएगा, अपनी आत्मा के सानिध्य में जाएगा, आत्म सानिध्य लाभ करेगा, उस आनंद का भोग करेगा। आनंदम धर्म इत्याहो। तो जब मनुष्य अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके आत्मा के सानिध्य में जाता है तो वो आनंद भोग करता है और धीरे धीरे उसी आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है, जिसको बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं था कि उन्होंने वो बिलीव नहीं करते थे, बट he did not want to mention that term आत्मा एंड परमात्मा, बिकॉज उसी नाम पे, आत्मा और परमात्मा के नाम पे ही शोषण चल रहा था और लोग उस बारे में फेडअप हो चुके थे, इसलिए उन्होंने उसको टच नहीं किया। नाक पकड़ा लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करते हुए पकड़ा। जहां तक बात है कि भगवान है, ऑफ कोर्स भगवान है, ये सभी लोग बता चुके हैं, लेकिन हाँ ज्ञान के माध्यम से भी उनको जाना जा सकता है, लेकिन सिर्फ ज्ञान के माध्यम से नहीं जाना जा सकता है, उसके लिए भक्ति पूरित हृदय चाहिए उनको समझने के लिए, जो कि आध्यात्मिक साधना से ही संभव हो सकता है। सिर्फ आध्यात्मिक साधना के द्वारा ही ब्रह्म को रियलाइज किया जा सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए उसको पढ़ना पड़ता है, ठीक उसी तरह से ब्रह्म को जानने के लिए आध्यात्मिक साधना का स्टूडेंट होना पड़ेगा, उस पथ का पथिक होना पड़ेगा।
ये मनुष्य की जो बॉडी है इसमें 9 प्रकार के चक्र होते हैं, और मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगी क्योंकि जैसा दादा ने कहा समय बहुत कम है। ये मन की यात्रा जो है ये मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र की है। भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो ये 2 हाथ की यात्रा है, पर मन की ये यात्रा वर्षों और जन्मों की हो जाती है। अगर आध्यात्मिक साधना का अभाव रहा तो ये यात्रा अंतहीन भी हो जाती है। इसलिए आध्यात्मिक साधना बहुत जरूरी है एक मानव जीवन के लिए, उसके चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो आध्यात्मिक साधना के द्वारा ही भक्ति का प्रस्फुरण होता है, और जब भक्त हृदय हो जाता है तो वो बहुत आसानी से उस परम तत्व को, उस ब्रह्म को रियलाइज कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा दीदी, आपको धन्यवाद। मैं इस आज के विचार को, आज विचार गोष्ठी को समाप्त करना चाहेंगे यहाँ पर। ये विचार गोष्ठी जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके पीछे पर्पज ये रहा है कि हम आपको कुछ बताना नहीं चाहते हैं, हम आपको कुछ सिखाना नहीं चाहते हैं। पर्पज ये है कि हम आपके दिमाग में कुछ चैम्बर्स है जहाँ से आप कभी इस विषयों पे कभी विचार नहीं करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे उत्तेजित करने की, हमारी प्रवोक करने की हमारी चेष्टा है कि आप उस चीज़ों को विश्लेषण करना शुरू करें। ये नहीं कि अंध भक्ति की तरह चलें। किसी ने कहा भाई कौवा आपके कान को लेके उड़ रहा है, कौवा के पीछे भाग लिए। हर चीज़ों को हम विश्लेषण करें, लेकिन विश्लेषण करते वक्त हम लोग कभी भी क्रिटिकल सिनिकल ढंग से, मतलब उसकी निंदा और उस ख्याल से न देखें, उस सिंथेसिस की तरफ बढ़े कि जिसका निष्कर्ष पहुंचे हमारे जीवन में। तो हम चाहेंगे कि इस पैनल के माध्यम से जो लोग सुनते हैं वो वैज्ञानिक, सब लोग वैज्ञानिक बने। हमारे सब के अंदर वैज्ञानिक छुपा हुआ है। अपने स्तर पे जितना भी सोच सकते हैं उसको समझिए। अंध रूप से, डॉगमा के रूप से कुछ मत लीजिए। अगर भगवान को भी समझना है तो डॉगमा की तरह नहीं, उसको एक अपने दिमाग में बढ़िया से सोच समझ करके कीजिए। नहीं तो होता क्या है कि लोग भगवान को मानते तो हैं, भक्ति भी है, लेकिन वो भक्ति अंध हो जाती है, अंधी हो जाती है। तो ऐसा ना हो पाए। तो बाकी ये सब चीज़ों के लिए बहुत कुछ आवश्यकता तो नहीं है, अपने मन के अंदर ही जाना है, बाहर कुछ किताब नहीं पढ़ना है, और मन के अंदर जाने की कोई ऐसी कोई लिमिटेशन क्षमता है नहीं। यही सब आप लोगों के अंदर ऐसी भाव को प्रकट करने के लिए ही हम लोग ऐसा करते रहते हैं। भगवान एक ऐसी चीज है, ईश्वर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसका हमें पता तो ईश्वर है, लेकिन क्या रूप, क्या रंग, क्या आकार है, ये किसी को पता नहीं है, कोई बता भी नहीं सकता। वो तो खुद से ही अपने अनुभव करना पड़ता है। तो चाहेंगे कि आप लोग इस विषय पे अपने में स्वयं में विचार करें, और सब लोग अपने अंदर ही, अपने अंदर छुपे हुए ब्रह्म को पहचाने, ईश्वर को पहचाने, और अपने अपना जवाब खुद ढूंढें। तो ठीक है, इसी के साथ इसको समाप्त करेंगे। सब लोगों को धन्यवाद, सब लोगों को नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा नमस्कार, रहा। नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।